back to my channel Makeup Forever. मैं हूँ शर्मिली and today I'm gonna be creating this look right here which is Instagram inspired makeup look. Instagram पे dark brown eye and lip makeup जो है वो बहुत ही famous है. So I thought कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना जाए and yes, I have created this look and if you want to see how I got this look then all you have to do is just keep on watching. But yes, before starting don't forget to subscribe to my channel क्योंकि ये बिल्कुल free है and you can follow me on my social media, my Facebook, my Instagram and my Snapchat and मैं जो भी products मैं use करूँगी मैं उसके सारे details जो है वो description box में डाल दूँगी, so make sure आप check जरूर कर लीजिए. Yep guys, let's get started. Firstly, I'm going to moisturize my face with Johnson Baby Cream. Well, ये जो है बहुत ही अच्छा moisturizer है for sensitive skin क्योंकि मेरा बहुत I have very sensitive skin. मुझे बहुत जल्दी कुछ लगाते ही breakout हो जाता है, जिसलिए मुझे ये क्रीम खास करके बहुत ही सूट करता है और ये बहुत ही अच्छा है. मुझे जब को प्रेसिडेंट में मॉइस्चराइज करता रहता है बहुत देर तक. So yeah, I love this moisturizer. अब मैं करूँगी कलर करेक्ट. For that I'm using my Miss Claire Full Coverage Concealer in the shade 11. अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन एंड फॉर दैट मैं ये लैक्मे का फाउंडेशन एंड ये फिट मी मेबेलिन फाउंडेशन यूज करूँगी एक साथ. मैं इसे ब्लेंड करूँगी यूजिंग माय ब्यूटी ब्लेंडर. मैं पूरी फेस को जो है उसे सेट कर लूँगी यूजिंग कॉम्पैक्ट एंड मैं यूज़ करूँगी मेरा ब्लू हेवन का आर्टिस्टो कॉम्पैक्ट. इसका जो शेड है ये है नेचुरल बेज. ये जो है थोड़ा सा येलोइश काइंड ऑफ शेड है तो कि इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है. मैंने कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया है. मैं डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई करूँगी मेरे आईलिड पे एंड फॉर दैट मैं यूज़ करूँगी मेरा LA Pro Girl HD कंसीलर इन दी शेड लाइट आइवरी एंड मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने बस आईलिड पे एज अ आई शैडो प्राइमर. एंड मैं इसे अपने फिंगर की मदद से ब्लेंड करूँगी. बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. ये जो कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा है. सो अप्लाई हो गया है. अब मैं सेट करूँगी यूजिंग माय सेम ब्लू हेवन कॉम्पैक्ट से. अब मैं अपना ब्राउज को जो फिल कर लूँगी. And for that I have the drawing eyebrow pencil from NCC Holic. मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी my favorite Odbo palette. So I'm taking this shade right here. I'm just taking it in tap. और मैं इसे अप्लाई करूँगी एकदम आउटर वी के क्रीज के ऊपर. ज़्यादा आउटर कॉर्नर में मत जाइए, एकदम जहाँ पे आपका आई का जो क्रीज एंड होता है एकदम वहाँ से एकदम सामने यहाँ पे प्लेस कीजिए एंड देन ब्लेंड कीजिए पूरा क्रीज. मैं
राइट हियर एंड मैं इसे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड करूंगी एकदम सेम जगह पे। इसे ब्लेंड करूंगी सर्कुलर मोशन पे एंड क्रीज पे थोड़ा सा इसे ब्लेंड करते हुए लेके जाऊंगी एंड अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी। से वो बिग फ्लफी ब्रश ले रही हूँ एंड ये जो लाइटर शेड था जो मैंने पहले यूज़ किया था ये शेड इसे लेके बस अपने आउटर वी पे जो है अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी तीनों कुछ भी हार्श लाइन वगैरह ना दिखे। तो बस क्रीज पे इसे ब्लेंड करना है। It's done now. अब मैं लूंगी ये कलर डार्केस्ट चॉकलेट ब्राउन कलर एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी वही स्मॉल ब्रश की मदद से सेम पोजीशन पे प्लेस करूंगी एंड इसे ब्लेंड करूंगी। सो ये हो गया है। अब मैं उसी सेम बिग फ्लफी ब्रश लूँगी एंड मैं ये कलर लूँगी ये लाइटर कलर एंड मैं इसे लेके बस थोड़ा सा लेके अपने आउटर में प्लेस करूँगी। तो ये ब्लेंड हो गया है। अब मैं क्या करूँगी मैं ये कलर लूँगी दिस वाइट शीट मैं एक फ्लैट शीटर ब्रश लूँगी एंड मैं उसकी मदद से इसे लेके अपने बस इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। जस्ट टू गिव अ ब्राइट आईलिड लुक। ये दो कलर मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे। अब मैं ये डार्कर शेड लूंगी थोड़ा सा एंड मैं इसे अप्लाई करूंगी मेरे लोअर लैश लाइन पे आउटर कॉर्नर पे। नाउ अब मैं अप्लाई करूंगी लाइनर एंड फॉर दैट मैं यूज करूंगी मेरा ब्लू हेवन का आई लाइनर एंड मैं एक थिक पिंक लाइनर ड्रॉ करूंगी। Done now. अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा। मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी द रिमेल लंदन का वाइट गोल्ड काजल। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई करूंगी। तो मेरा आई मेकअप इज डन एंड मैं अपना पूरी फेस को जो है इसे कंप्लीट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा शिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट
Okay, so I'm taking this color right here and मैं इसे अपना जो है contouring कर लूँगी. एक small brush लूँगी and मैं इसे अपने nose को भी contour कर लूँगी. मैं लूँगी ये लाइट कलर जिसकी जो है हल्का सा शीन भी है. मैं इसे बहुत ही कम अमाउंट भी लूँगी. मुझे इसको थोड़ा सा कलर दूँगी. सो इट्स डन नाउ. अब मैं करूँगी हाइलाइटर अप्लाई. तो मैं लूँगी ये हाइलाइटर स्मॉल ब्रश की मदद से विजुअल केस यानी कि मेरा एकदम चिक्स पे, मेरा नोज पे, चिन पे. अब मैं एक स्मॉल ब्रश लूँगी. अब स्मॉल ब्रश की मदद से अपने कॉर्नर्स पे हाईलाइट करूँगी. Done now. अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक एंड मैं फर्स्ट अप्लाई करूँगी मेरा हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक इन द शेड विक्सन. ये ड्यूप लिपस्टिक्स है. ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसलिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी मेरा ऑडी हुडा ब्यूटी का न्यूड लिपस्टिक. So it's perfect now. अब मैं अप्लाई करूँगी मेरा सेटिंग स्प्रे, मेरा DIY सेटिंग स्प्रे एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है. अगर आप मेरा इस पर एक फुल वीडियो है कि कैसे बनाते हैं DIY सेटिंग स्प्रे. अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन पे दे दूँगी या फिर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं. So yeah guys, this is my final look and I hope you guys enjoyed watching this video, and if you do then please don't forget to share this video with your friends and family, right? And if you want to see such interesting videos like this then stay tuned. Bye.